So this is Claude code. To use it, download it. It is if you have $20 subscriptions, you can start using it. If not, तो फिर at least this much interface is going to be free for you. इसमें मसला नहीं है, हमने Claude के ऊपर directly काम नहीं करना. I am only going to use Claude to send my code to GitHub right now, just like Visual Studio, nothing much on this end. So I would go to add files. Add files में जाकर I have this file जो कि आप सबने डाउनलोड करनी है, intelligence sales intelligence bot, and the second file over here, sales intelligence bot, you can just download it from here. uh, okay, it's already integrated. So just by clicking on the file, I am in that folder right now, और इस folder से I have to send it to GitHub. अब GitHub पे send करने के लिए हमारे पास straight एक ही code होता है, which we use almost every time. It's in the Google Doc as well. Let me share it with you again. अच्छा, just one thing. Before we actually send code to GitHub, हमें GitHub के अंदर अपनी repository को भी तैयार करना है. So I would be working inside Tenside Lab की repository. You can use your personal reps as well. आप उनके अंदर काम कर सकते हो. And go to repositories over here and new repository. And in new you can name it anything. Also आपको यहाँ पे शायद अपने personal rep नजर आ रही होगी, मुझे Tenside की आ रही है. So I will name it anything, sales bot के नाम से. It's available. I can make it public. uh, you can choose to keep it private, but private के केस में आपको फिर tokens generate करने पड़ेंगे if you have to connect it with कल को with Google console or any other thing. Public में you don't have to worry about that. But if it's going to contain some sensitive information, which usually it would because it contains email IDs, etc. So in that case, private ही रखें. I'm keeping it public because एक तो APIs वाला issue है. Secondly, I have to share this rep with you after this session, and I want it to be accessible, so इसलिए मैं इसको public ही रखता हूँ. बाकी other instructions you don't need to change anything for now. README हम खुद ही add कर लेंगे from the file that we have. It's going to run. ये हमारी GitHub की rep तैयार हो गई है. Nothing else we need on this end. ये ऊपर जो लिंक है, ये आप जो URL है, this is going to be your repository का link. This is what we need now inside Claude to send our code from our local machines right over here. Okay, so मैं तो Claude से इसको send कर रहा हूँ, but if you don't have Claude or Visual Studio or any other interface for coding, you can simply go to uploading an existing file, और जो मैंने sheets में sorry Google Drive में जो sheet link भेजा हुआ है, download it. It would be in the zip file. Zip को आप unzip करके इसके अंदर you can upload those file over here. But I want to show you through that route, तो मैं वहीं से करूँगा. Also ये हमारे पास Git का लिंक आ रहा है. This is the one we would be using अगर आपको ऊपर पहले नजर नहीं आता. So just give me a second. In chat you have now the code to send code from your local code to GitHub. इसके अंदर जो लिंक है वो मेरी Git का है. You have to change it with your Git का link, otherwise वो मेरी में कोड अपलोड हो जाएगा.
me share my screen again. So here we are back on Claude code. I just have to start this session in Claude ताकि मेरे पास terminal का access आ जाए. That's very simple. I can just write anything and then stop it from working. Now जो मेरे पास ये screen आ गई है, this is what exactly I needed. यहाँ पे we have a lot of options. ऊपर in top right you can see preview. We need just terminal. Terminal के अंदर I'm getting a lot of these options. Okay. So जो मैंने chat में भेजा syntax, I can just copy paste it exactly as it is, and it would send the code जिसके अंदर ये rep के अंदर जिस folder को हमने open किया हुआ है यहाँ पर, it would go into that. एक second. Some reference. Okay. Now we are ready. एक इशू था कि I was using जो practice में file चल रही थी, that was already open in the Claude session. Name was exactly the same. So when I tried to uh, throw it into the Git, so it was giving me error because some of the files couldn't be sent. But now because we are using the right file, so send हो गया. You do not need to change anything from the code that you already have. Exactly वही file Git में जाएंगी. If you are having any issues, तो chat में बता दें. I have a couple of people from my team as well. They can guide you in case there are any issues. Acha, so this is our Git. Um, so this is our GitHub. I'm refreshing it. And now you can see I have all the files that I needed are now available in this space. 4 files to be precise we need, and that's what we have over here. Let me briefly go over these things. एक तो हमारे पास script है. Script क्या करेगी कि it would run code and it would have the entire context to call Claude to ask data from hunter.io and also provide Claude context के किस कंपनी के लिए ये कर रहे हैं, उस कंपनी को एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड दैट्स इट. फिर इसके बाद वी हैव इनसाइड गिटहब के अंदर वी हैव वर्कफ्लोज.
ओके, फिर वी हैव वर्कफ्लोज, और वर्कफ्लोज के अंदर वी हैव दिस डॉट वाई एम एल फाइल। डॉट वाई एम एल फाइल क्या करती है, दिस इज अ क्रॉन जॉब। तो ये बताएगी कि कब उसने सिस्टम को रन करना है और एग्जैक्टली सिस्टम ने करना क्या है। तो जो हमारा पूरा वर्कफ्लो क्रिएट करने वाला सिस्टम है वो इसके अंदर से हो रहा है, और यही सिस्टम को बता रही है कि हमारी जो एक्शन जब परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर ये सारे उसने एपीआई यूटिलाइज करने हैं। अभी हमने एपीआई सेटअप नहीं किया है, वी वुड बी सेटिंग देम अप थ्रू गिटहब इटसेल्फ, एंड वो भी हम सेटअप कर लेते हैं। तो दिस इज अ स्क्रिप्ट, ये रीड मी है, यू कैन गो ओवर इट व्हेनेवर यू वांट। दिस इज मोर ऑफ लाइक फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं और हमारी फाइनल आउटपुट देखने में कैसी होगी। और फिर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वन सेकेंड, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर द सिस्टम, ताकि वो ये क्लॉड की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने मॉडल ये वाला यूज करना है। ये गूगल की है। If you want to escalate and use Google as a next step after this session, so you can go on and use that. Okay, so now we have all of these things ready. अब पहले हम कोड में थे, कोड में वी हैड ऑल ऑफ दिस कोड। फिर इसके बाद एक्शंस में यू वुड सी कि हमारे पास यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है, एंड दिस हैज सेल्स इंटेलिजेंस ब्रीफ। हम जब अभी नहीं, बट आफ्टर सेटिंग आवर एपीआईज व्हेन वी वुड बी रनिंग इट, तो ये हमें जो हमें पूरा फॉर्मेट चाहिए फॉर सेल्स आउटरीच, हमें वो डेटा ला कर देगा। अब बस एक काम रह गया कि वी हैव टू इंटीग्रेट एपीआई, व्हिच मीन्स के क्लॉड के साथ हमने काम करना है। सो I have set up an account for you. I think my screen should be visible with that. Half it, screen share. So on my screen, you can see Claude ka setup. This is not your regular Claude for the chat purposes. This is Claude platform. इसका भी मैं लिंक चैट के अंदर शेयर कर रहा हूँ. It should be in your Google doc file as well. इसके अंदर you have to create your account similar to Claude का account. वो सब काम करना है. I have added $5 into my account to show you guys how this exactly works. अब इसके अंदर we have APIs and you can start using APIs from this section exactly. अब by default यही खुलेगा. इसके अंदर we have get APIs and I have already created two APIs for today. एक मेरा API इतनी कॉस्ट ले चुका है, दूसरा इतनी ले चुका है. But because I've ran them multiple times, so after running today's session, I will also show you कि हमारे exactly कितने USD actually में deduct हुए हैं. Right now the amount is 2.68. Consumption इतनी हो चुकी है. So let's see after running our bot ये cost कहाँ पर जाती है. अभी आपके पास कोई नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा मोस्ट लाइकली. सो यू कैन क्रिएट एपीआई, नेम इट समथिंग, एड इट, एंड देन यू वुड बी एबल टू सी एपीआई. एपीआई आपको एक ही दफा नजर आएगा, बाद में यू वोंट बी एबल टू एक्सेस इट अगेन. तो उसको कॉपी करके आप कहीं अपने लोकल सिस्टम पर रख लो. ऑल्सो जस्ट एन एडवाइस, बिकॉज दिस एपीआई इज डायरेक्टली लिंक टू कॉस्ट. सो जितनी दफा एपीआई रन होगा उतनी कॉस्ट होगी. सो दिस एपीआई नेवर एवर शुड बी अपलोडेड इनटू योर कोड फाइल्स. अभी भी कोड के अंदर आप देखो तो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल डाला हुआ है जिसके अंदर एंथ्रोपिक की की एग्जिस्ट करेगी, और वो की मैं डायरेक्ट गेटअप के ऊपर डालूंगा. इन नो वे एनीवन कैन एक्सेस माय की थ्रू दिस राउट. आप या तो अपने कोड के अंदर या डॉट env फाइल, जिसको एनवायरमेंट फाइल बोलते हैं, वो अगर गिटहब पे अपलोड कर दोगे, सो देयर आर बॉट्स जो कि लोगों ने इसी तरह के, जिस तरह हम बना रहे हैं, इसी तरह के बॉट्स लोगों ने गिटहब पर बनाकर डाले हुए हैं, which are at every day scanning through repositories and waiting for a naive coder to upload their keys. चाहे वो ओपन एआई की हो, गिटहब की हो, ग्रॉक की हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की हो. once those scammers they got your API key, uh, they would put their system onto that, and it's a very common practice. और गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी स्कैन करना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है. इवन जो हमारा बॉट है इसके अंदर भी कैपेसिटी है, ये भी कर सकता है गिटहब को स्कैन. सो लेट्स मूव ऑन. मैं यही वाली जो की है आउटरीच की के नाम से, मैं इसको यूज करूंगा फॉर आवर पर्पस, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू शेयर द की विद यू. तो ऑलरेडी मैंने की को सेटअप कर दिया हुआ है. लेट मी शो यू वेयर आई सेट इट अप. इफ यू गो बैक टू गिटहब, तो गिटहब के अंदर वापस आप अपनी प्रोफाइल पे आएंगे. गिट मैं डेंसर पे क्लिक कर रहा हूँ. गो टू सेटिंग्स.
एंड सेटिंग्स के अंदर यू वुड हैव दिस सेक्शन, नीचे आकर सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, इसके अंदर एक्शंस है, एक्शंस पे क्लिक करना है एंड देन आई हैव एंथ्रोपिक एपीआई की ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर. अब मजे की बात यह है कि एंथ्रोपिक की ये जो की है इसको मैं भी दोबारा एक्सेस नहीं कर सकता. इफ आई हैव टू एडिट इट तो मुझे नई की ऐड करने की ऑप्शन आएगी, पुरानी की एक्सेस करने की ऑप्शन नहीं होगी. एंड बिकॉज गेटअप ऑल्सो ट्राइज द बेस्ट फ्रॉम देयर एंड कि वो प्रोटेक्ट करें हमारे कीज को. सो दिस इज व्हाट देयर एफर्ट्स लुक लाइक. ऑसम. एंथ्रोपिक की मेरी इंटीग्रेटेड है. आपने क्या करना है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट पर जाना है, यहाँ से नेम इट समथिंग, एंथ्रोपिक एपीआई की ही नाम रखना है आपने. और ये डॉक में मेंशन है बिकॉज यही वेरिएबल हमारे पूरे कोड में भी यूज हो रहा है. एंड देन ओवर हियर यू हैव टू पेस्ट द की जो कि आप एंथ्रोपिक से यहाँ पर लेकर आओ. सिमिलरली गो बैक, क्रिएट अनदर न्यू ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट और इसके अंदर hunter.io का हम एपीआई सेटअप करेंगे. सो इसके लिए हम अपने डॉक पर आ जाते हैं. सो दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. एग्जैक्टली सेम ही आपने भी वेरिएबल नेम्स रखने हैं. सो हंटर एपीआई की, आई एम कॉपिंग इट एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट नाउ ओवर हियर. अब ये हमें मिलेगी कहाँ से? बाय द वे दिस वन इज फ्री, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो हंटर का जो डैशबोर्ड है, इधर आ जाए. सिंपल लॉग इन करना है, नो रॉकेट साइंस अप टिल दिस पार्ट. ऑन दिस लेफ्ट डैशबोर्ड पैनल यू वुड सी एपीआई का ऑप्शन. एपीआई पर आ जाए और आपको यहाँ से अब अपनी पर्सनल एपीआई जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा. सो इस बटन को करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, माई एपीआई की हैज बीन कॉपीड. तो मैं यहाँ पर आके इसको अब पेस्ट कर दूंगा. सो आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन सो दैट आई कैन पेस्ट द की. ओके, मैंने अपनी की अपलोड कर दिया. हंटर एपीआई की हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू माय कोड. अब गिटहब के ऊपर मेरे एंड से जब भी कोई फाइल अपलोड होगी और उसके अंदर ये वेरिएबल होगा hunter underscore AP underscore key, it would automatically refer to this part. Nothing much required from our end on this. अच्छा, नाउ वी आर डन. हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, सेल्स बॉट उसमें आ गया है, हमें दो एपीएस चाहिए थे, दोनों इंटीग्रेट हो गए हैं. वी शुड बी नाउ रेडी टू रन आवर कोड. सो before we move to running this code part, I am taking a 5 minute break. In this break, you can and I'm pausing the recording over here. If you have any problems, any issues, any concerns, you can shoot them out and I would be responding to them. So from 7 till up till 7:40 we have our break. Recording as well. Acha, so two notable questions that I received in the private chat, and I think everyone should get to know about it. So one of them was कि अगर Claude coding है, so how what else can we work on? So I don't have Visual Studio right now available on my system, but I have anti-gravity. This is a ditto copy of Visual Studio. Uh, इसके लिए once again you have to go over here. मैंने file open कर ली है. You can simply go explore, and over here instead of this you would see option to open files. You would open file और मैंने बाय द वे हमने जो फाइल अपलोड की उसके अंदर दो वेरिएंट्स हैं, एक स्केड्यूलर के नाम से और दूसरा फाइनल बॉट के नाम से. सॉरी, एक सेल्स इंटेलिजेंस बॉट है और एक फाइनल बॉट है. सो सेल्स इंटेलिजेंट बॉट वुड ओनली गिव यू रिसर्च बेस्ड ऑन योर पैरामीटर ऑफ योर कंपनी, जिसको अभी हम चेंज करेंगे फ्रॉम डेंसाइट टू वट एवर यू वांट टू सर्च फॉर. एंड एक फाइनल बॉट है. फाइनल बॉट के अंदर हम हंटर का एपीआई भी यूज कर रहे हैं एंड इट इज गिविंग अस देयर इनसाइट्स एज वेल. सो अगर तो आपने स्केड्यूलर कर लिया था तो कोई इशू नहीं है, सॉरी सेल्स वाला कर लिया था कोई मसला नहीं है. फाइनल बॉट इज द फाइनल वन दैट वी हैव टू यूज. तो या तो अभी आप गिटहब में जाके दोबारा से अपलोड कर सकते हो या फिर यू कैन ओपन एनी कोडिंग प्लेटफॉर्म और फिर आप यहाँ से कर लो. सो अभी फॉर एग्जाम्पल फाइनल बॉट की है. अभी द थिंग इज के हम गिटहब की रेप के अंदर इफ वी ट्राई टू अपलोड कोड अगेन, सो वो ये करता है
that try to look for the similarities. और सिर्फ जो additional updates होती हैं, it only updates them. So if instead of A you wrote B, तो वो A को B से replace कर देगा. But if A के आगे you have put in another word and you want कि सिर्फ वो another word push हो into your rep, so that's not going to happen. So वो हमें force push करना पड़ता है into GitHub repositories ताकि exact जो हमारे local terminal पर code है वो ही आगे जाए. That sound a slightly technical thing, which it is, and we have to know कि फिर इसका क्या solution है. इसका solution है force push. उसका syntax में मैं दे रहा हूँ. Force push can be used as normal push as well, also force. इससे different ये होगा कि अगर आपने खुद कोई edits किए हैं GitHub के ऊपर, वो निकल जाएंगे. They would not be saved. सिर्फ जो आपके लोकल फाइल में कंटेंट है वही जाएगा. एंड आई थिंक फॉर नाउ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. सो लेट मी शेयर. फोर्स पुश का मैंने सेंड कर दिया. इफ यू अपलोडेड द रॉन्ग फाइल तो आप चेंज कर लो. इफ फाइनल बॉट ही किया तो फिर कोई इशू नहीं है. एंड सेकेंडली एक इशू है विच इज फ्रॉम आवर एंड के इन द रिक्वायरमेंट्स you have to change it just one thing. So let me share my screen. So you see, आप सबका सेल्स बॉट में एग्जैक्टली यही फाइल्स अपलोड हुई हैं एक रिक्वायरमेंट्स के नाम से. आई एम ओपनिंग इट एंड यहाँ पे डैश ई लिखा होगा. डैश ई जस्ट रिमूव दैट और सिर्फ रिक्वेस्ट बस आगे एज इट इज प्रोसेस करके देन यू हैव टू राइट कमिट चेंजेस एंड देन सिंपल कमिट चेंज. अब चेंज हो गया. वी आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक, राइट कोड. dash e is generally used if you have to run files from local systems because we were running it locally. तो उसमें रह गया. GitHub के ऊपर it does not need that syntax at all. तो ये जो Google Drive है इस पे भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा. बाकी now we are 100% ready. Nothing is pending from our end. हम actions में जाके अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं. By the way, in the break, I tried to run it a couple of times to do any debugging. कोई इशू अगर आ जाए और ये आ गया था, so इसकी हमने debugging कर ली है. अब कोई इशू नहीं होना चाहिए. So अब जब हम after running these, अब जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉस्ट देखेंगे वो 3 रन्स की कॉस्ट होगी. 2 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक अब हम करने लगे हैं रन. सो नाउ यू हैव टू कम फ्रॉम कोड टू एक्शंस. एक्शंस के अंदर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सेल्स इंटेलिजेंस ब्रीफ नजर आएगा. come to this and then run flow. Run flow अब ये कर रहा है. This is running. Status यहाँ पे चेंज हो जाएगा. once it's successful. So this is running जो .yml फाइल है. It's running that now. .yml फाइल हमारे APIs को भी कॉल कर रही है और जो हमारी .py की फाइल थी, Python की फाइल थी, उसको भी रन कर रही है. One thing to note कि this is all the basic knowledge that would help you to generate more and more code from Claude or any other AI platform that you use. But you need to know what possibly could be done ताकि आप अपना code change करवा सको from time to time. So now we have this ready. This is running successfully. Issues के अंदर हमारे पास अब 3 issues हो गए होंगे. 2 मैं पहले रन किए थे, एक अब आया. So इसके अंदर पूरी हमारे पास सेल्स ब्रीफ आ गई. अच्छा, वही 3 कंपनीज जो कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च कर रहे हैं उस सर्च से यहाँ पे ये मिला. बाय द वे उस प्लेटफॉर्म का नाम है एक second. यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा था.
Okay, so we are using platform called Hacker News. रीडमी फाइल जो है वो इसमें से निकल गई है. इट शुड हैव शोन, जो हमें पहले इनिशियली रीडमी सेक्शन नजर आ रहा वुड हैव शोन दैट ओवर हियर, बट वो नहीं आ रहा. सो आवर प्लेटफॉर्म इज हैकर न्यूज. हैकर न्यूज इज वन प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज ये 3 कंपनीज का डेटा अवेलेबल है. लाइक इट शुड हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, और उनमें से 3 ये टेक कंपनीज का. Now, to add on this, you can use a couple of other platforms as well, जो कि इस कोड के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाएंगे. एक उनमें से GitHub का अपना सर्च एपीआई है, जो कि GitHub की ही रिपोजिटरीज जो एक हमने बनाई है इस तरह की. आई थिंक मिलियंस और बिलियंस ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन. So your code can search through those repositories and find you the right content. So for example, if you want to get to know about a company who's a lot into uploading some certain form of technical data. For example, you want to target companies who have front end capabilities. So जो ज़्यादा front end का code available upload कर रहे हैं, you would get to know about. And similarly in README जो हमारा अभी नहीं आ रहा, but in READMEs it has companies upload their information, their news, and their frameworks, their datas, a lot of things. You would have access to all of these through GitHub का अपना search API. फिर थर्ड है वेंचर बीट. दैट्स आल्सो फ्री. उनके प्लेटफॉर्म से यू कैन स्क्रैप ऑल ऑफ दैट डायरेक्टली थ्रू देयर एपीआई. नाउ दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन यूज फॉर सेल्स पर्पसेस. अब एक चीज हमारी रहेगी, और वो है हमने कोड के अंदर कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है फ्रॉम डेमसाइट टू योर ओन प्लेटफॉर्म. सो उसके लिए कोड में आ जाए, एंड इन स्क्रिप्ट्स वी हैव जनरेट ब्रीफ. आई थिंक कॉन्फिग में. Okay. So in configurations, we will go to edits, and in edits, यहाँ से डेंसाइट की जगह you can add company name, your company. अगर आपकी कंपनी का डेटा in any form is available online, so automatically Claude को पता होगा about your firm. If not, then ideally don't add it. Otherwise, it would go into hallucination. Assume you for something else. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डेंसाइट का ना पता हो, सो इट वुड बी लाइक फॉर डेंसिटी या कोई सिमिलर साउंडिंग नेम, दैट वुड गो फॉर दैट. देन योर सर्विसेज, बिकॉज एज पर योर सर्विसेज इट वुड प्रोवाइड द एंगल जिस तरह से आपने इन कंपनीज को टारगेट करना है, एंड द टारगेट मार्केट. सो वेरी स्पेसिफिकली वी हैव लेबल्ड ओवर हियर यूएस बेस्ड मिड मार्केट कंपनीज scaling their operations or tech teams. Ab scaling operations, you have no idea, absolutely no idea कि how much GitHub a search API is useful to figure out कि which company is actually scaling if they are a tech firm. Because without GitHub, no single company survives. And most of their repositories are private, no doubt, because internal teams की उसमें information होती है, but a lot of that is available for public use cases as well. Uh, from you, whoever has used Python key libraries or any other libraries, they are built by private companies. And then through repositories, they are made publicly available for anyone to use them. Just to give you an example, जो हम TensorFlow use करते हैं in Python for machine learning purposes, that is built by Google. And up till, I'm not sure आजकल कौन सा version है, but up till like second last or third last version, that is made publicly available for everyone to use. And latest version, obviously, that's for their internal use cases only. वो private repo में होगा. Later on, it would be made public as well. Similarly, Facebook का open graph, it's public for everyone. It's the Intel की libraries, NVIDIA, like I'm talking about giant enterprises right now, but even at smaller level as well, for various different purposes, repos are made public. So search API would provide you with all of them very easily. अब ये signaling words हैं. To figure out companies who are scaling, you can change them and try them as suits you. Okay, and then there are other instructions on how your Claude API should react. You are free to change them howsoever you want. Now it is your property. ये करने के बाद commit changes आपने कर देना है. As soon as you make any change, commit changes का option would become possible for you, and you can change anything from there. If you have any questions up till this point, feel free to shoot them out. One last thing I have to show you is कि हमारी costing कितनी आई है.
So 2.68 was the price before I have refreshed it. Let me refresh. And now the price is $2.72 for 3 runs. So if you would divide that by three, तो तकरीबन a little over $0.01 हमें पड़ रहा है, 0.13 over something for 3 runs, which is super cheap, super cost effective. And if you would look at the हमारा prompt size was also not small. In very detail, we have tried to explain it. Okay, what exactly are we looking for? One more thing that I think if you can see, so that would be super useful. Next discard. And okay, so when I'm sending my code to Claude, so over here I'm using their base model, which is Echo. You have options to use Sonnet and Opus as well. Ideally, do not use them until and unless you want very specific form of detailed output for any reason जो कि ये provide करने में fail हो गया है. Why? Because जो हम अभी cost देख रहे हैं $0.013, Sonnet and Opus would never be able to meet that. And just ये जो अभी आप प्राइस देख रहे हो 2.68, before this session I was experimenting with Sonnet 4.6. 4.5 उन्होंने रिटायर कर दिया, 4.6 is the base model for Sonnet. उसके and the output by the way was exactly the same, थोड़ा formatting का difference था. That was costing me over $0.8 per API call. अब एक दफा दिन में रन करना हो तो it means nothing, but if you are running it several times a day that we have to do for Densite, that's a lot of money, and it can shoot up to hundreds of dollars per day. So try to always start with a basic model. आपका काम नहीं हो रहा, then eventually escalate. क्लॉड की डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आपको एग्जिस्टिंग सारे मॉडल्स की मॉडल नेम्स मिल जाएंगे. आप मॉडल नेम्स चेंज कर सकते हो. वन मोर थिंग, टोकन जो है ये आप डिसाइड करते हो कि कितने शूट होने हैं इन वन एपीआई कॉल. जब हम चैट यूज करते हैं या क्लॉड कोड यूज करते हैं ना, उधर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि कितने टोकन्स में शूट करने इन वन गो. इट कैन शूट फ्रॉम 2000 टोकन्स टू 200K टोकन्स इन वन गो. अब इधर हम उसको फिक्स कर रहे हैं एज 1500 और वहां पे वी कैन नॉट फिक्स इट आउट, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. इसलिए इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ क्लॉड, सो यू वुड सी कि किस तरह से आपके जो यूजेज विंडो है उसको टोकन विंडो भी बोलते हैं. After a few messages, that's exhausted. Even on paid plans as well, within 30-40 minutes, you can exhaust it out come easily. Why? Because initial token, चाहे आप उसको hey लिख के भेज रहे हो, start लिख के भेज रहे हो या पूरा एक लंबा prompt दे रहे हो, वो initial start ही आपका 2000 token से करेगा. And this I'm talking about for every chat. चाहे आप casually कुछ उसे पूछ रहे हो or something else. But over here we can control it. You can try to reduce these tokens as well. और जितने tokens कम होंगे उतनी आपकी costing कम आएगी. So wherever you feel comfortable, go with that amount. Okay, so that's it from my end for today. We are almost reaching our limit of 1 hour. After this session, you would be receiving recording of this particular session along with that Puri guide. I need to update a couple of things in our code. I would shoot that as well. And within a few minutes, you would have the entire guide with you. Feel free to use it at any point. If you want guidance, you have my email. You can reach out, and at suitable time, I would reply you on that as well. It's something that this teaching sessions I personally do out of passion. And I would love interacting with you, with all of you later after this event as well, via email. And that's it from my end. Looking forward to staying in touch with all of you in future Densite sessions as well. Hopefully next week after Eid, we would be planning another one. And also we have our summer cohort starting from 15th of June. If you are interested in learning all of these things in detail, so you would find that over there.
Otherwise, I personally enjoyed going over things a lot today. If anything, I wasn't able to communicate properly. So super apologies from my end, and I will try to make up for that. So thank you so much, everybody, for joining.